Hello students, today we will be doing the revision of our chapter 4, which is quadratic equations. Let's discuss the definition of quadratic equation. An equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0 is called a quadratic equation. So what is the definition? An equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is called a quadratic equation. This is very important condition. A is not equal to 0. If in the equation value of a is 0, this whole term will become 0 and hence we will be left with a linear equation. So in a quadratic equation, a can never be equal to 0, b and c can be equal to 0. So coming to the next definition, roots of a quadratic equation. What are the roots of a quadratic equation? These are the values of x which satisfy the given quadratic equation. Satisfy का मतलब क्या है कि left hand side and right hand side becomes equal. Those value of x means variable, those values of variables which satisfy the given quadratic equation, these are called roots of a quadratic equation. Let's consider an example. Suppose I am having an equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0, and if I put x is equal to 2 in this equation, it is in place of x we are putting 2. 2 square minus 5 into 2 plus 6 is equal to 0. 4 minus 10 plus 6 is equal to 0. 4 plus 6 is 10. 10 minus 10 is equal to 0. हमने x is equal to 2 पुट किया और ये इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई. राइट हैंड साइड भी 0 हो गई और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो गई, 0 हो गई. सो x is equal to 2 is a root of the given equation. Similarly, for x is equal to 3, the equation is also satisfied. इसी इक्वेशन में जब हम x इज इक्वल टू 3 भी पुट करते हैं तो भी इक्वेशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है. सो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. एंड हाउ मेनी रूट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट द मोस्ट 2 रूट्स. मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? 2 रूट्स हो सकते हैं. वो वैल्यू जो इक्वेशन को, वो वैल्यू वेरिएबल की विच सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो फॉर दिस इक्वेशन x is equal to 2 and x is equal to 3 are the roots. Now what are the methods of solving a quadratic equation? First method is method of factorization. ये वही method है which we used to do earlier for polynomials, method of splitting the middle term. Second is method of quadratic formula. What is quadratic formula? X is equal to minus b plus minus square root of d divided by 2a, where d has value b square minus 4ac, which is called discriminant of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0. d को हम क्या कहते हैं? d की वैल्यू क्या होती है? b square minus 4ac, and d is called discriminant of the given equation. So we have two methods of solving a quadratic equation. First is method of factorization and second is method of quadratic formula. There is another method given in your book which is method of completing the square, but that is not in your syllabus, so we won't be doing that method. Next we are discussing nature of roots of a quadratic equation. Now हाउ डू वी डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि नेचर ऑफ रूट्स का मीनिंग क्या है, कि रूट्स किस टाइप के आएंगे. इक्वल रूट्स आएंगे, अनइक्वल रूट्स आएंगे, या रूट्स आएंगे ही नहीं. दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करने के लिए वी टेक d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब हमने इक्वेशन के लिए सॉल्व किया, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, देन वी से दैट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है. डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट. 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी जो कि रूट्स होंगी गिवन इक्वेशन की. फॉर एग्जाम्पल 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0.
What is A? 6. B is -1. C is 2. A क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है. B क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है. और C क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होती है. सो व्हाट इज D? B स्क्वायर माइनस 4AC. -1 स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू -2. ए की वैल्यू क्या है? 6 है. और C की वैल्यू क्या है? -2. सो 1 + 48. 4 6 24, 2 48. माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया. सो व्हाट डू वी गेट द वैल्यू ऑफ D? 49. सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. कैसे रूट्स होंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे. इसका मतलब है कि जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, वी विल गेट 2 डिफरेंट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं दोनों मेथड से, वेदर बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. वट एवर सूट्स यू, जो भी आपको ईजी लगता है आप इन दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. सपोज वी सॉल्व इट बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. 6x² - 3x - 2 = 0. 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 -12. 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 क्या है? -12 है. सो वी नीड एनी टू नंबर्स हुज सम इज -1 एंड प्रोडक्ट इज -12. ऐसे कोई दो नंबर्स विल हैव टू थिंक ऑफ हुज सम इज -1 एंड प्रोडक्ट इज -12. सो द नंबर्स आर 4 and 3. 6x² - 4x + 3x - 2 = 0. What is common from these two terms? 2x. 3x - 2 plus 1 common, 3x - 2. So we get x = 2/3 and x = -1/2. देखो दो डिफरेंट रूट्स आए. ये दो डिफरेंट रूट्स क्यों आए? क्योंकि d की वैल्यू क्या थी? ग्रेटर देन 0 थी. So we'll continue in the next video. Thank you.